Perfect. In yesterday, right, we talked related to uh, sector of economy where we try to talk about input, output, and different animal and husbandry and fisheries. So we talked about different kind of revolutions: green revolution, blue revolutions. We talked about pink revolutions. We talked about white revolutions, right? So any doubt on those part? So we completed the primary sector basically, which is called as like give me a second, which will be called as like uh, animal, sorry, not animal, basically farming, right? Agricultural inputs and agricultural input ପରେ ତାର output ଯୋଉଟା କି ଆମେ again food processing ପାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲେ, right? Farmer producer organization ତାର challenges କଣ ଥିଲା ନା land consolidation କରିବାର ଥିଲା but କେହି ବିକିଲେନି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ producer organization ନେଇକି ଆସିଲେ even ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ लोन या फिर टेक्निकल सहायता या फिर भाविनियो स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ये सब जिन से प्रोवाइड करा होती सेमिति आमे देखिथिले मत्स्य संपदा योजना जोथरे कि गोटे सागर मित्र वाला कांसेप्ट देखिथिले राइट व्हाई आई एम सेइंग दिस वर्ड्स इज बेसिकली दीज आर इंपोर्टेंट फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव सो सागर मित्र जोथरे कि सेमानको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करा होती काहे कि बिकॉज़ सेमाने जदी ट्रेनिंग वगैरह पाइले देन मत्स्य उत्पादन अधिक होबो इफ like production of fisheries, right? If that will be increasing, then we will have a good amount of export also. From that export, our balance of payment crisis will be won't be there. Correct? No balance of payment crisis because I'm export of the okay. So our next sector will be related to manufacturing and service sector. So manufacturing sector that will be the second, basically primary. This is secondary, and service sector that will be tertiary. Okay. So first we will try to complete this LPG reform and circular economy. Then we will talk about ease of doing business, labor reforms, minimum wage. Then we will talk about MSME. Okay. So let's focus on LPG reforms. Now, when we are talking about manufacturing and service sector, we will try to see in different way. That is, first we will try to talk about LPG reforms, then fourth industrial revolutions, circular economy. After that, we will try to see what are ଯଦି ଆମକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ର ପଲିସି ଗୁଡା କଣ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ, assemble in India କଣ, then we will talk about କି startup ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି promote କରିବା and what is this intellectual property right कि तांको intellectual property right केମିତି देई परिबा startup ମାନଙ୍କୁ, then ease of doing business and MSME textile miscellaneous economy. Then here, in case of first, which is talking about LPG, we will first understand what is LPG reforms. Then we'll talk about what is fourth industrial revolutions. Already there is one, two, three already done. Now we are in fourth industrial revolution, which will have artificial intelligence. Okay. So then artificial intelligence, how the globally all the countries they are communicating with each other to promote this artificial intelligence, and will try to make a sustainable economy. And we'll talk about circular economy. So coming to LPG, right? If you see prior to LPG, if you see like before LPG, what was the situation? India was morely in agriculture sector, right? That means LPG started to promote which sector? Basically, to promote the manufacturing and service sector. Liberalization, privatizations, and globalization. These are related to what? Related to secondary and tertiary sectors. So earlier we were having like the economy was completely driven by the agriculture sector, right? So here if you see prior to 1991, 64% of Indian economy was based on 1991. Basically it was on the farming. Now slowly, because of the introduction of LPG, we are now in 55%. I think yesterday also I tried to share one of the link. Give me a second. Mm, Give me a second. I'll just try to cover that. That is also important. Did anyone find this PDF? I forwarded in LPG 2024 group. This is related to India's economy growth since 1947. What happened actually? I'll just try to tell you this thing because this is very important. Like this has good content related कि 1947 ପରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମିର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା। ତ 1947 ପରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ our output, if you try to talk about from the perspective of output, what is output? Basically जो export वगैरह हमको करियर अछि, तो our GDP was decreasing if output will decrease. That means I am saying if export decreases, that means the output will also decrease.
or output decreases, that means export will decrease. And so the output decreases, that means production only, that means GDP is also decreasing. So to increase the GDP, we need to have more and more number of production. तो बर्तमान कथा होची जदि देशर तमे GDP बढ़िया को चाहूछ ताल तुमको करियर कोन अछि प्रोडक्शन एंड कथा होची प्रोडक्शन तमे जो करिवो हमर ता पूर्वरु before 1991 what was the production, it was related to agriculture sector, but आमे कहूछ हमको प्रोडक्शन करियर अछि एंड फिनिश्ड गुड पठेवार अछि ठीक अछि एग्रीकल्चर तो प्राइमरी सेक्टर ता माने ताकू हमें रॉ मटेरियल वाला यूज करि परिबो इन सेकेंडरी सेक्टर करेक्ट नो तो बर्तमान हमको जदि फिनिश्ड गुड पाइबार अछि दैट मींस ताकू हमको सेकेंडरी सेक्टर ले पड़ियो दैट मींस सेकेंडरी सेक्टर रे भी हमको प्रोडक्शन बढ़ियार अछि जोथि पे हमें ग्लोबलाइजेशन आडू जिवु सो here what they thought is the country must grow, that means the output must increase. Jodi country ko बढ़िबार अछि then output must be increased, but because of the policy that East India Company Britishers they had, right, the way they implemented the policy, output was low due to Britishers economic policy. माने ट्राई करते कोन बहुत सारा एक्सप्लोर करिया पे भाबो तुमको जने तमरो जने तुमको जने आसी कि कहयो कि हमें से जमीदारी प्रथा रे तुमको एक्सप्लोर करिवो देन तमरो थॉट प्रोसेस कोन आसी कि भाई मु तार काम करबी जोथि पई कि आउटपुट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हिजबो ट्रू टेक्सटाइल इंडस्ट्री रे जब तमे देखिबो से माने ट्राई करले कोन रॉ मटेरियल नै कि पळेया पई जेतले से रॉ मटेरियल नै कि पळौथिले से माने इंड्यूस करूथिले इंपोर्ट अधिक करिकि इंडिया को बाहरु मींस फॉरेन रे तांकर इंडस्ट्रियलाइजेशन थिला जोथि पई कि रॉ मटेरियल इंडिया रो नै कि गले एंड से माने इंपोर्ट करैले कोन इंडिया को ड्रेसेस वगैरह टेक्सटाइल वगैरह जिनस तो बर्तमान जदि इंडिया रो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नष्ट कले दैट मींस आउटपुट अगेन कमी गला सो ब्रिटिश मानकर जो इकोनॉमी पॉलिसी थिला जोथि पई कि बिफोर 1947 द policies were in such a way that the output was decreasing. Because the output was decreasing after independence, the first thing that government tried is, due to so many challenges and constraints, our output could able to increase up to 3.5% of GDP till 1975. Means with those challenges and constraints जोटा कि ब्रिटिशर्स मैंने क्रिएट करथिले तापर इंडिया रो जो डिफरेंट विल टॉक अबाउट द 5 ईयर प्लान राइट से जो 5 ईयर प्लानिंग वगैरह हमें कले ताकू हमें ट्राई कले कि हमर जीडीपी को हमें बढ़ाइबा केमि बट हमें जत्ते भी ट्राई करूथिले जीडीपी बढ़ी पारुनथला एंड 3.5% जाय ही हमें मैक्सिमम बढ़ी पारुथे and this 3.5% is considered to be Hindu rate of growth because the India was considered to be a Hindu nation. Okay, so this growth was fixed till 1975. So जत्ते प्रकार तमे नै कि आसुथिले माने लाइक अप टू 1980s जाए कि डिफरेंट 5 ईयर प्लान हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ करबा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी फेलवर हला हमें एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन एंड ग्रीन रिवोल्यूशन बट स्टिल we could able to manage up to what percent 3.5%. So what happened 1980 this output started rising suddenly 1980 see forget about 1991 जोतरे कि LPG ता पूर्व मु कहू 1980 रे आउटपुट स्टार्टेड राइजिंग दैट मींस there is a turnaround breach the threshold of 3.5%. आगुर जो 3.5% जोटा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ थिला सडन आउटपुट राइज हैला आउटपुट राइज एथि पई हैला जोथि पई कि से 3.5% रो जो जीडीपी सेटा कटि कि बर्तन 5-6% भलिया ग्रोथ स्टार्ट देखा वाला तो बर्तन कथा हो व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर द नॉन फैक्टर्स व्हिच लीड टू 1980 वाला आउटपुट राइजिंग तो कौन हेतै पारे तो 1980 पाई there can be different factors but we will try to talk about what can be the non factors कोडा नथिला for example we know 1991 रे लिबरलाइजेशन हेतिला LPG जोटा आज मु कहिबी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सो लिबरलाइजेशन इन द मींस कि we are trying to open our economy कि जदि फॉरेनर को माने अछंदी से माने आसी कि हम एरिया रे इंडस्ट्रियलाइजेशन करि परिबे तांको तमे सफिशिएंट अमाउंट रो दियो तमे कोन चांसेस दियो तांका पई इकोनॉमी को ओपन करा ताकि से माने आसी कि सफिशिएंट अमाउंट रो इन्वेस्टमेंट करंतु सो obviously this liberations that we brought in 1992 that means this is a non factor तो liberalization गोटे non factor हे गला then there is for increasing output one way is liberalization तमे जदी को गोटे बिजनेस करिया को चाहू जदी तम बिजनेस में मु कहबी कि मु इन्वेस्ट करबी देन तमे पैसा पाइलो गोटे बाहर लोक पैसा पाइलो देन तमे से पैसाटा को यूटिलाइज करिकि अधिक अधिक प्रोडक्शन करबो बट कथा होची ए लिबरलाइजेशन कांसेप्ट आसला 1992 बट वी आर टॉकिंग अबाउट 1980 रे इंडिया रो इकोनॉमी रे जीडीपी 3.5% रु अधिक आइतला दैट मींस ऑलरेडी दे ट्राई टू ब्रीच द थ्रेशोल्ड ऑफ
3.5%. But liberalization was not a factor there. Coming to the next one, how we can increase the rising of output. जदि आमे कहले कि लेबर मार्केट रिफॉर्म कथा होची जो तमरो अछि कि लेबर माननकु तमे एतिकी घंटा काम करे दे परिबो ता अधिक कले तम नारे केस चलिबो तो ता ऊपर जदि तमे कहबो कि जदि ताकू आमे रिफॉर्म आनिबो कि टिके कोहळ कर दबु राइट रिलैक्सेशन दबु कि हां ठीक अछि कॉर्पोरेट नॉट कॉर्पोरेट बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर जो माने अछंती तांको आमे कहबो कि नै नै तमरो सेमति किछि आमे तम ऊपर कोनोसी कार्रवाई करिवनु जदि तमे लेबर को 5 घंटा जगह 6 घंटा खटौछ. So what they try to do is like if they will do labor norms ease out means business get an edge to utilize the labor resource on their will. Basically the businessmen they will try to utilize the labor on their will. See these are men's content. Okay, why men's content? Because you should understand like post 1947 what is going on in our Indian economy. Okay, so what I'm saying is this is also a non-factor because these labor related reforms that we brought around in 20s. Okay, कि 2000 मसिया परठु आमे एगुडा लेबर नॉर्म्स इज आउट करते किंतु जदि लेबर नॉर्म्स इज आउट करबो दिस विल बी अ फैक्टर व्हिच विल ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. बुझिला ना बुझिला. फॉर एग्जांपल तम घर रे कंस्ट्रक्शन काम होची जदि तमे लेबर मानन को पूरा स्ट्रिक्टली रूल रहइबो कि लेबर माने 5 घंटा ही काम करबे देन तम घर रो जो कंस्ट्रक्शन काम लेट ही पारे. किंतु जदि कहबो कि सेमिति कोनोसी रूल नाही जदि मालिक चाहिबो लेबर माने को 5 घंटा जगह 7 घंटा खटेई पारिबो ताले तमर कंस्ट्रक्शन काम जल्दी हबो. हां कि नहीं? Yes, sir. Okay. So this is what we are talking about. These will try to increase the output growth. जोटा कि हमें कहूचे कि 1980 रे आउटपुट ग्रोथ हैला तापाई हमें देखुचे कि एई पोजीशन थिले हेई थाई पारता किंतु लिबरलाइजेशन नथिला ना ही लेबर मार्केट थिला सॉरी लेबर मार्केट रिफॉर्म थिला. नेक्स्ट कंजम्पशन डिमांड रखेला जदि डिमांड बढ़िला ताहाले भी आउटपुट बढ़िबो जदि कंजम्पशन इंक्रीज हैला व्हिच विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ताहाले आउटपुट बढ़िबो. किंतु कथा होची गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस डिमांड थ्रू फिस्कल पॉलिसी. तो गवर्नमेंट जो डिमांड रो खेल केते बेले हुए सेताले मु कहबी कि टैक्सेशन को मु कमै देली तमे जोठी 100 टंका रे 20 टंका टैक्स दवा कथा मु कहबी कि तमे 100 टंका बर्तन 10 टंका दबो. दिस इज व्हाट वी कॉल this influence. Government is trying to influence the demand means trying to increase the demand through fiscal policy जोटा बजेट रो मु कोन कहली जोठी 20 टंका टैक्स पाया कथा सेठी मु 10 टंका पाइबी. दैट मीन्स 10 टका कहा पाखे रहिबो जो लोक टैक्स दवा कथा से लोक 10 टका ता पाखे रहिबो. जदि गवर्नमेंट मात्र 10 टका नेला दैट मीन्स गवर्नमेंट को गला मार्केट रो अधिक पैसा रखिला जोथि में मार्केट डिमांड बढ़ो. ट्रू, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस. So this is what we call fiscal expansion which will lead to demand increase. That means having extra cash at people's hand. For example, there is Manrega. Manrega means you are trying to create asset without much skill, get money, expansionary thought process. So this is like give Manrega 100 days रो वर्किंग गारंटी. तो जदि सेथिरे तमे दउछ को लोक मान को जो माने अनस्किल्ड लेबर तो सेही लोक मान को लगे कि तमे एसेट क्रिएशन करोछ. फॉर एग्जांपल से माने पोखरी तयारी करले देन पोखरीटा कोन करा ओटे एसेट सेथिरे तमे पानी रहइला देन माछ रहइला माछ चाष होला सेही लोक मान को लगे कि तमे लेबर काम करी कि रास्ता घाट तयारी करूछ जोटा कि फ्यूचर रे गोटे इनकम जनरेट करिवो. दैट मींस you are trying to utilize the unskilled people for some asset creation, giving those unskilled people money which will increase the money in the market, and this is like what we call expansionary thought process. But these all things were not there during 1980s. Then what was the factor which tried to kill the output? So the factor was the attitude of the government towards the economy that got changed. कि गवर्नमेंट रो जो एटीट्यूड थिला इकोनॉमी को देखिबा पई सेटा से थिला. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए एटीट्यूडिनल शिफ्ट. गवर्नमेंट कोनला ना एटीट्यूडिनल शिफ्ट हला ता एटीट्यूड रो शिफ्ट आसा कोन हमर जो इकोनॉमी अछि जोटा कि हमर अछि लाइक फार्मिंग हे गला या फिर जो छोटो छोटो बिकॉज़ ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम 5 ईयर प्लान ही जाइतिला. सो से माने स्टार्ट करथि छोटो छोटो इंडस्ट्री ग्रोथ करिया. So this attitude is called pro-business attitude. They are trying to promote the existing business house. Means existing business house, no more restriction on production and acquiring extra capital to enhance their production process. तापूर्व कौन था कि existing जो business house हुआ था तार ऊपर restriction लगे रखते कि भाई 8 अधिक तमे production कर परिवनी 8 अधिक तमे raw material consume कर परिवनी because ताकू लागुतला जदी 8 अधिक तमे raw material वगैरह consume करले that means semane may be behave कर दे पारिबे exploiting the local people. For example, गोटे food processing industry
then भाव कि से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लेट्स सपोज से गहम आनी की अट्टा बनौची करेक्ट तो अट्टा जो बनौची जो इंडस्ट्री अछि ताकू कहै कि भाई तू मैक्सिमम एतिक अमाउंट रो प्रोक्यूरमेंट करि परिबु गहम ताठ अधिक करि परिबु काहे कि जदी तू प्रॉफिट पाई देखिया को गलो मे भी हे पारे देयर इज ए चांसेस दैट तू कोन करिवु लोक मानन को जोठू गहम आनिबु फार्मर मानन को तू हरिण करि दे पारु करेक्ट एंड से मानन को तू एक्सप्लोर करि पारु ए भलियार थॉट प्रोसेस थिला बिकॉज़ ए जो थॉट प्रोसेस एटा कोठु आस्थिला ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स मानन कोठु राइट तो से थॉट प्रोसेस को से माने ट्राई कले बंद करिया पई एंड बिजनेस हाउस को मूव करिया पई कि ठीक अछि आमे से जो रेस्ट्रिक्शन तो ऊपर थिला कि ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन द एक्स्ट्रा कैपिटल से गुडा हम रिमूव करि तो हमें जहां पैसा मींस नॉट आउटसाइड एटलीस्ट इनसाइड रे बिकॉज़ आउटसाइड वाला कांसेप्ट तो सेटा हमें लिबरलाइजेशन में देखिबा करेक्ट नो कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एफडीआईज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से गुडा पर्यंत आसी नबला बट से माने बिजनेस को ग्रोथ करिया पई जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट ओडा थिला बिजनेस पई से गुडा को से माने बंद कर देले सो आवर ग्रोथ स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम 1980s not 1992 and 1992 we tried to accentuate the growth in the sense आमे ताको एक्स्ट्रा पुनी आगुरी ऐड कले कोन ना डिफरेंट पॉलिसी दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एलपीजी so 1980s रे इंडिया रो इकोनॉमी रे 1980s रे the hindu rate of growth that we tried to breach that growth which was just 3.5% of gdp basically so we tried to increase it how we could able to increase it through the attitudinal shift कि गवर्नमेंट रो जो एटीट्यूड थिला से एटीट्यूड चेंज हला फॉर ए प्रो बिजनेस एटीट्यूड okay then 1990s came where we tried to include this liberalization privatization and globalization which again tried to help this business attitude again business growth again help करा through liberalization means बाहर से माने प्राइवेटाइजेशन करना जोडा कि गवर्नमेंट ओन करथला सेगुडा को तमे ट्राई करा भंडा रे ठीक ठाक काम करिया पे ठीक अछि बिजनेस हाउस को ट्राई कर से माने ताकर कंट्रोल करा दो ग्लोबलाइजेशन ताकू तमे ग्लोबल मार्केट रे ओपनिंग कला तम इकोनॉमी टा ग्लोबल मार्केट रे ओपनिंग हला तमे से लाइक एक्सपोर्ट कला इंपोर्ट कला देन ग्लोबल प्लेयर्स आसिले तम मार्केट रे बसिले तमको ग्लोबल मार्केट रे एक्सेस मिलला so this is what we try to do like we try to accentuate the growth of our economy and 2020 our out is rising more than 7% GDP okay so this is what how 1924 we are looking at it but there is a condition so earlier we were pro business approach now also we are what we are doing is a pro business approach but world bank report came they told india should follow pro market approach for more growth so what is the difference between pro business approach and pro market approach pro market approach is nothing but you are trying to promoting the competition that will government ensure the level playing field for everyone that is related to pro market approach see government at one side we are trying our best to go for pro market approach for example we are increasing startup india correct startup india रे try करछे नुवा ना innovation एने पे but the same time government has this pro business approach also for example if you talk about aviation industry से जो उड़ा जहाज वगैरह हमर की अछि टाटा go air loss spicejet loss indigo struggling but they are somehow trying to get income but they are still struggling telecom sector jio that means still we are promoting pro business approach means ଗୋଟେ particular industrial house को हमें try करते support करिया पे for example talk about से जो port related power adani telecom related जो aviation industry tata तो जदि हमें सेथरे कंपटीशन नै किछि for example remember I was talking about npci करेक्ट एनपीसीआई रे हमें कोन करू जदि एनपीसीआई होची गोटे अम्ब्रेला यूनिट जदि ता पई हमें गोटे कॉम्पिटिटिव मार्केट नै केसिबा ताहाले सेठी कोन हबो obviously competition market आसले बोथ मान दिजण मानकर ग्रोथ हबो इनोवेशन हबो डेवलपमेंट हबो हां कि नै इज दैट क्लियर Yes, sir. okay so this is just like way forward from world bank report what india is trying to do is uh, what world bank report what india it is saying to india that india should follow pro market approach for more growth anyway we are having 7% growth but to have a faster growth like more than 7% what we need to do is pro market approach hope it is clear right this was the pdf I just shared okay coming to our side now you understood from 1947 till 2024 what is the situation right in between there is 1980 in between there is 1992 here we could able to breach
the 3.5% of Hindu rate of growth. Then 1992 we could able to enhance more, and currently we are having more than 7%. And last year there was a report like India's economy is in autopilot mode. Means whether government do any schemes or not, it will automatically go more than 7% by default, because government already did lot of transformation in infrastructure. Because of the infrastructure transformation, there is lot of, like, the GDP is anyway increasing, because the private players, all the private like industries, they are doing lot of production, and demand is also there in the market anyway. Now, because we are talking about manufacturing sector, service sector, now we'll talk about share of employment in improving. So if you see 1991 before ରୁ farmer ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ। जो लोक माने जदि देखियो को सेक्टर लोक मानक काम अधिक थिला, फार्मर माने सबठु अधिक थिले। There are no service sector, there is no, this is related to service, this is related to manufacturing. Okay, this is manufacturing, this is service. So there is no manufacturing, there is no service much. That's why 64% people were in agriculture sector, that is primary. Now coming to 2018, we could able to see in manufacturing sector there are 24% people they are employed, 34% they are employed in service sector, and of remaining 42% they are employed in agriculture. That means there is a shift in different sector, basically from primary sector to secondary and tertiary sector. We could able to see from 1991 to 2018 जोठी 64% थिले बर्तमान 42 हेला। That means लगभग 22% ର shift ହେଲା from primary to secondary ଆଉ tertiary. Clear? And shift ହେଲା माने obviously a manufacturing and service sector is in growing mode, right? जदि से माने growth करछे ताहाले हेटा हो। Okay. Next concept, industrial policy and LPG reform. So we'll talk about 1948 for industrial policy by India's Minister for Industries like Syam Prasad Mukherjee. He brought the first policy. 1956 industrial policy resolution asila. So industrial policy resolution kona asila na they will be focusing more on public sector led heavy industries for self-reliance. This is again very bad. Heavy industry you should not able to think of in the beginning. Why? Because from 0 to 100 it will take time, right? But from 0 you should gradually go to 10, go to 20, then slowly rise to 100, then you should not have any issue. But initially India didn't have any kind of industrial growth. Why? Because industry bani nathila, and जो textile industry thila सेटा को भी सेमाने नष्ट कर देथिले ब्रिटिशर्स. That means we are in a phase where we had a zero industry policy. कि आम पाखरे इंडस्ट्रियलाइजेशन रो से स्किल डेवलपमेंट से गुडा किछि नथिला, एंड हठात तमे कहते कि हमें हेवी इंडस्ट्री बनै दो, देन इशू आसी जिवो. सो जोथि भाई कि हेवी इंडस्ट्री फेलियर आस्तिला. सो 1956 दे वर डूइंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, कि इंपोर्ट जो गुडा करा होतला ताकू सब्स्टिट्यूट करिया पे हमें ट्राई करथले हेवी इंडस्ट्री बनै कि हमें निजे जो जिंस गुडा बाहर इंपोर्ट करछे से गुडा को हमें प्रोडक्शन करिया बोले. 1991 balance of payment crisis, PM Narasimha Rao to launch new industrial policy with LPG reforms. See, we talked about this balance of payment ray, there is called FDI, right? Investment. तो कथा होची balance of payment crisis केतेबेले हबो जेते तमर इन्वेस्टमेंट आसीबोनी. ट्रू. जदि तमर राइट साइड रे जो इन्वेस्टमेंट थिला जोथिरे तमर थिला कि बैंक रो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग थिला एंड एनआरआई मन डिपॉजिट थिला, जदि से जिंस मु न आनिबी ताहले मोर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो. बिकॉज़ इन द लेफ्ट साइड वी आर हैविंग व्हाट? We are having current account. Right side we are having capital account. True. So in current account we are having visible and invisible. In visible component we are talking about goods, and goods रा में import export. this time 1991 रे आमे अधिक अधिक इंपोर्ट करूचे, इंडस्ट्री काम कलानी, आ जोथि पे हमें भाबुतले कि इंपोर्टेशन करिया बट भी काम देलानी. जोथि हमें ट्राई कले कोन अधिक अधिक गुड रो इंपोर्ट करिया पे अधिक अधिक इंटरनल एक्सपोर्ट हे पारो. काहे कि बिकॉज़ हम बाहर इंडस्ट्री में तापे मु दरकार कोन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दरकार, जोथि में इंडस्ट्रियलाइजेशन आड़ खोजिबी. तो बर्तन सेत्री हेला कोन अल्टीमेटली यू विल सी लाइक देयर इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. बिकॉज़ ऑफ दैट 1992 व्हाट केम? LPG reform. Any doubt? So next concept is liberalization. It means the withdrawal of control and regulation by the government on the industry. कि गवर्नमेंट रो जो इंडस्ट्री ऊपर रे कंट्रोल थिला से कंट्रोल को बर्तन धीरे धीरे हटाओ, एंड इंडस्ट्री मानू को निजे लाइक ऑटोनोमस भलिया काम करिया को दियो.
So before liberalization, the ministerial interference in the functioning of central public sector enterprises, that means the fall in professionalism and inefficiency. कि जितने की इंडस्ट्री गुड़ा ताकू कंट्रोल किए करूथला ना मिनिस्ट्रियल लेवल रो इंटरफेरेंस रहउता तो कौन करिवो कौन करिवोनी सब तक को हमें कंट्रोल बिकॉज़ वी टॉक्ड अबाउट ग्लोबलाइजेशन सॉरी नेशनलाइजेशन राइट प्राइवेटाइजेशन थिला एंड नेशनलाइजेशन आमे सब गुड़ा कोन करूथले कि nationalize बैंक गोटा जो प्राइवेट बैंक दिला ताको भी हमें नेशनलाइज करथिले राइट 1969 यू रिमेंबर कि जेतला हमें बैंकिंग वाला डिस्कशन करथिले तो सब जिंस रे हमर मिनिस्टर लेवल रो सब जिंस रे मिनिस्टर आसी इंटरफेयर करबे तमे कोन प्रोडक्शन करनी सेटा करनी करेक्ट सो मैंडेटरी इन individual to obtain license to start any industrial activity प्रत्येक इंडस्ट्री को बिफोर लिबरलाइजेशन कौन छोटो मोटो जदि माने इंडस्ट्रियलाइजेशन रे प्रोडक्शन वगैरह करियो छ ताको लाइसेंस नवा पड़तला इवन ऑन लाइसेंस इंडस्ट्री गवर्नमेंट वुड इंपोज प्रोडक्शन कोटा कि से माने भी प्रोडक्शन कोटा लगा देबे कि भाई 8 अधिक तमे प्रोडक्शन करिवो भी नहीं एंड इट वुड अपॉइंट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स टू चेक द कंप्लायंस ऑल्सो ये जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर अछंदी से माने कोन करबे भाई आसी कि से माने कहबे तमे तमु कहैतला 100 टा बाइसाइकल तैयारी करिया पई तमे 110 टा केन आसला जो 10 टा एक्स्ट्रा आसला तापाई मते रिपोर्ट करियार अछि जदि तुमको रिपोर्ट करिया चाहो ना ताले मते पैसा दियो सो दीज वर द सिचुएशंस दैट्स व्हाट आई टोल्ड इन 1980 दिस थॉट प्रोसेस बेसिकली जो बिजनेस वाला आंको ए माने कोहळ करिया पई प्रो बिजनेस एटीट्यूड आसिला प्रो बिजनेस एटीट्यूड कोन आसिला ना जो लाइसेंस वगैरह अछि सी मु कहली ना गोटे थिला लेबर रिफॉर्म लेबर नॉर्म्स रिफॉर्म करेक्ट नो कि लेबर मानकर जो नॉर्म्स अछि ताकू मु जदी रिफॉर्म करी बेसिकली मु कहबी कि इंस्पेक्टर आ जोडा को लेबर ऊपर बहुत चार्ज न लगाया पे ठीक अछि लेबर को माने अड्डा नियम थिला कि भाई 6 घंटा रो अधिक तमे काम करे देबो किंतु जदी को आबो कि नहीं तमे तम हिसाब रे देखो 7 घंटा ले भी चली देन से सब जिंस एबे ही नथला तो लिबरलाइजेशन रे हमें कहते कि जो प्रोडक्शन ऊपर कोटा थिला से जिंस गुडा को धीरे धीरे ए माने आहुरी सी 1980 रे ये थॉट प्रोसेस आस्तिला बट ताकू गोटे एक्सेंचुएट करा हला जेतले लिबरलाइजेशन in paper asila kebe 1992 so after lpg reforms in basically the liberalization in industrial policy manufacturing industrial license required only for कि गोटे इंडस्ट्रियल लाइसेंस तमे केले नबा जेतले तमे अल्कोहलिक ड्रिंक बने नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो गोडा सोसाइटी रे एक्सटर्नलिटीज सेथि पई तम मैन्युफैक्चरिंग पई इंडस्ट्रियल लाइसेंस न टोबैको प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस इक्विपमेंट बनेगा तमे बंदूक बनेगा को ट्राई करछो राइट तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव गन पाउडर इंट्रोसेलुलोज एंड मैसेज सम hazardous chemical सिंपल जिंस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो गुडा बनेगा रहती ता पई तुमको लाइसेंस ना पड़ो अदरवाइज यू डोंट हैव टू गेट द लाइसेंस so rest of the industry simply file memorandum with the commerce ministry manufacturing license not required. Of course, bank, insurance, aviation, telecom, etc. They require license because they are going to operate in huge scale, right? So the approval from regulator required, but this is about manufacturing industry policy. So for these are not manufacturing industry; they are not producing any goods or services they are producing, but they are not actually producing any goods. But here, when we are talking about manufacturing industry, they are trying to produce goods. So for goods production, we saw only those industries which are producing negative externalities they have to take license. Otherwise, they don't have to take any license. They will simply go and have a memorandum of the commerce ministry and they can start production of the goods. Is that clear? This is what we call liberalization. Any doubt in liberalization? Second. See, till 1991, the big companies prohibited in sector of reserved for small scale industries, MSME. The big industry मानों को कहला कि जो छोटा छोटा इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल जन अगरबत्ती बनाउछि तो तुम ता सेक्टर रे जाई कि इंटरफेयर करनी बिकॉज़ दैट इज ऑलरेडी रिजर्व तो से माने जेमिति काम करिया चाहन तमे तांको काम को हैरान करनी फॉर एग्जांपल पिकल्स चटनीज मस्टर्ड ऑयल ग्राउंड नट वैक्स कैंडल ग्लास बंडल स्टील अलमीरा एक्सेट्रा कि सेमान को तांको आराम से तांको काम करिया को जे तमे से सेक्टर रे काम करि परिबोनी जदि तमे से सेक्टर रे काम करबो देन सेमान को हमें प्रमोट केबिटी करिवो बट आफ्टर 1991 बर्तन धीरे धीरे से कहले कि नहीं तुमको भी हमें बिकॉज प्रो बिजनेस एटीट्यूड आसला करेक्ट नो कि गोटे बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल अंबानी से चाहते कि चलो वी विल आल्सो डू पिकल्स चटनी देन से कहले नहीं तुम कर परिबो पूर्व थिला 1991 बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
कथा हूँ जदि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कंपटीशन न रहिबो जदि गोटे बड़ प्लेयर न आसी मार्केट को एमाने भी तांको निज अनुसार चलिबे करेक्ट नो कि हाँ आमर तो व्यवसाय हो जाउची आमे टिके टिके करके चलै दउछु किंतु जदि गोटे ह्यूज बड़ इंडस्ट्री स्टार्ट करबा से काम करिया पई एमाने भी निजर क्वालिटी रे कंप्रोमाइज आउ कर परिबे करेक्ट नो बिकॉज एमाने कंप्रोमाइज करिवे जदि एमाने कंप्रोमाइज करिवे आंको जिंस अधिक बिक्री होता ताले आंको जिंस बिक्री हबनी सो इफ यू सी even in Flipkart or Amazon you will talk about in Amazon there is Amazon basics you see even Amazon basics जो गुड़ा से माने निजर प्रोडक्ट करके मार्केट को छाडुछन फ्लिपकार्ट रो समिति गोटे फ्लिपकार्ट एसोर्ड वाला तांकर गोटे थाए जोटा कि से माने सर्टिफाइड करदी फ्लिपकार्ट रो निजर भी प्रोडक्ट अछि जोथरे कि फ्लिपकार्ट इज ई-कॉमर्स बट अगेन आई एम सेइंग फ्लिपकार्ट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग दैट मींस फ्लिपकार्ट इज बिहेविंग एज ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिमिलरली Amazon is a e-commerce side but it is also behaving as Amazon also producing some goods right for example Amazon Alexa correct no तो जनरली Amazon जदि तुम वेबसाइट को जाके चेक करिवो तुमको मिली जिवो कि Amazon भी एमिति किछि जिंस प्रोड्यूस करछि जोटा गोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करिया कथा सो ए सब जिंस चेंजेस हला केतले 1992 परे सो post 1992 government graduates wrong this list by 2015 no becomes was reached for SSC SSI or MSME industry small scale industry या medium small scale माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इंडस्ट्री मानक पाए एमिति आउ कोनोसी लिस्ट रिजर्व होई रहलानी कि केवल तुम माने एगुडा बनेबो आउ आग्रह करबो बोली सेमिति कोनोसी सिचुएशन रहिला ही नाही दैट मींस समस्त सब किछि बनेई पारिबे दिस इज लिबरलाइजेशन नेक्स्ट LPG second component is privatization any doubt in liberalization okay. So privatization is again simple selling of government owner companies into private parties so basically we are talking about disinvestment so reducing government shareholding to below 50% is what we call privatization see there is something called strategic disinvestment this is what we are talking about disinvestment means reducing 50% what a token disinvestment sila hongi nahi and what is strategic disinvestment so privatization right we are talking about strategic disinvestment where the government shareholding will be reducing to less than 50% that means government will become a majority shareholder that means government decision final decision about private employer जो माने अछंती private company माने जो मानक शेयर होल्डिंग मोर देन 51% और मोर देन 51% अछि से माने स्टार्ट करबे डिसीजन मेकिंग रे हेल्प करिया पाई तो जदि से माने डिसीजन मेकिंग रे हेल्प कले ऑब्वियसली से माने जेतु तांगर पैसा लगैछंती से माने ट्राई करबे हम पैसा रा प्रॉफिट होआ पाई तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट रो जदि 50% लेट सपोज गवर्नमेंट रो 40% अछि एंड प्राइवेट मानकर 60% अछि देन ए 60% जो प्राइवेट मानकर अछि से माने ट्राई करबे कंपनी को रेगुलेट करिया पे ऑब्वियसली से मानकर जेहेतु 60% अछि से माने चाहिबे हमर अधिक रो अधिक प्रॉफिट हो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉफिट हो तारो डिविडेंड गवर्नमेंट को मिलियो 40% तो गवर्नमेंट को बिना टेंशन रे से सेक्टर रे कोनोसी काम न करके एटलीस्ट प्रॉफिट मिलियो सो गो फॉर प्राइवेटाइजेशन सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड IPCL VSNL all these became privatized PM Rao PM Bajpayee PM Modi were proactive related to this privatization कि जदि तुमको लागुची कि सेठी मते बहुत एनर्जी लगाया पड़ुची मोर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सी कथा जदि गवर्नमेंट एटा बुझिबो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू ऑलरेडी सॉ राइट कि SBI रो से जो एम्प्लॉय वगैरह होंतु या फिर को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट ओनली SBI को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिकॉज़ से माने जानते कि भाई हम गवर्नमेंट रो पैसा मिलुची हम काम जेमिति कले भी हम पैसा मिलबो राइट सो से माने केबे गोटे प्रॉफिट बेस्ड पाखु जिबे ही नाही जोथि विल टॉक अबाउट कि अधिक रो अधिक प्रॉफिट कले तम इंडिपेंडेंस हो इवन गवर्नमेंट रो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जोड़ा अछंती तांकु इंडिपेंडेंट मींस ऑटोनोमस करिया पे से माने नै केसे रत्न स्टेटस महारत्न नवरत्न दैट विल टॉक अबाउट ओके कि मींस तमे हमको एती अमाउंट रो प्रॉफिट दे दियो देन हमर कोनोसी कंट्रोल रहबनी तम ऊपर तमे इंडिपेंडेंटली तमे तमर डिसीजन नै परियो मैनेजर डिसीजन नै परियो काहा को रिक्रूटमेंट करिया अछि कोन रिक्रूटमेंट करिया अछि जदि तमे प्रॉफिट करू न देन गवर्नमेंट डिसीजन न तो बाबा समस्त चाहिए कोन आ भाई ऑटोनोमस आ भाई तुमको जदि कहबो कि ना तमे कोन पढिबो कोन नै सेटा मु ही कहबी तमे जहा पढिबो ऑब्वियसली तुमको सेटा ठीक लागिबोनी तुमको दरकार कि मु मो इच्छा अनुसार मते आज इकोनॉमिक्स भल लागुची मते काली साइंस भल लागुची मते काली भाविनियो एनवायरनमेंट भल लागुची या फिर ज्योग्राफी भल लागुची मु मो अनुसार पढिबी नॉट कि आउ कहा अंडर रे कहा अनुसार पढिबी करेक्ट ऑटोनोमस आ भाई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन दबा कि ठीक है हम प्रॉफिट सो बट से प्रॉफिट रे अगेन तमरा बहुत सारा एनर्जी लॉस होची तागर मैनेजमेंट ए सब जिंस किया पे तमरा एनर्जी लॉस तार बेटर तमे प्राइवेटाइजेशन कर दियो कि पैसा आसीबो से पैसा तमे गरीबी हटाओ वाला संस्था रे लगे दे परिबो करेक्ट टू अपलिफ्ट द बेसिकली जो अछि हमर गरीबी राइट पॉवर्टी
पॉवर्टी को अपलिफ्ट करिया पे तमे कोन करबो से पैसा को यूटिलाइज करि पारिबो allowing entry of private owned companies into the sector which were previously reserved for public sector companies तो जो गुडा आगु पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी रे थिला सेठी तमे प्राइवेट कंपनी मानको को भी अलाउ करछो फॉर एग्जांपल बैंकिंग रे आगु सब तमे देखिथिबो जति 1969 रे 14 टा बैंक नेशनलाइज हेथिला बट से माने कोन कहले बैंकिंग को नेशनलाइज न करके बैंकिंग को प्राइवेटाइजेशन करो इंश्योरेंस ताको प्राइवेटाइजेशन करो टेलीकॉम सेक्टर ताको प्राइवेटाइजेशन करो जेथि आगु बीएसएनएल थिला देन तमे देखिलो कि जियो आसिला एयरटेल आसिला मझे बहुत सारा कंपनी आसिले बट अगेन प्रो बिजनेस हाउस आटिचु जोथि बैंकिंग जियो आ एयरटेल दीटा ही रहि चली तो कंपटीशन ताका भीतर रहउनी बेसी जदी कंपटीशन बहुत भलो होता आहुरी जदी मार्केट को भलो भलो प्लेयर्स आसले ताहाले ए जो 4G 5G 4G ରୁ 5G जेति टाइम लागुची 5G ରୁ 6G जोटा अधिक टाइम लागे कथा सेटा बहुत जल्दी हिजिवो oil gas related all were related to private owned companies they also try to participate so in privatization till 1991 many of the industrial sector were reserved for the public sector industries no competition and lack of innovation but after LPG reforms only following industries are reserved for public sector undertaking like atomic energy railway transport etc so only these are related to कि एथरे तो पब्लिक सेक्टर को आनो बाकी आउ सॉरी प्राइवेट सेक्टर को आनो आउ अदरवाइज आउ सबु थिरे तमे कोन कहला प्राइवेट सेक्टर को आनिलो पीएम मोदी इवन इन रेलवे प्राइवेट ऑपरेटर्स आर अलाउड दैट विल टॉक अबाउट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट अंडर रे जेता हमें रेलवे विषय माने डिस्क्राइब करिया सेता हम देखिया कि इन फ्यूचर इवन रेलवे रे हमें प्राइवेट प्लेयर को आनिया होतो सी outside market रे तुमको न्यूज़ कोन आसीबो railway is getting privatized no that is not the concept railway is not becoming privatized railway sector रे हमें private player मान को आनिबो you understood the difference basically right गोटे जिंस को तमे प्राइवेटाइज करो ना बट सेठी तमे प्राइवेट प्लेयर मान कर एंट्री कोन छ ताहाले कोन हबो ए जो तमे वर्तमान भाबो गवर्नमेंट रो केवल रेलवे चलीची तो रेलवे रो अवस्था देखो टॉयलेट गुडा कर अवस्था देखो करेक्ट नो किंतु मु जदी प्राइवेट प्लेयर को लेके आसीबी दैट मींस देयर विल बी अ कंपटीशन एंड जेहेतु कंपटीशन हबो तो एपटे गवर्नमेंट भी सुधुरिबो सेपटे लोक माने बेटर फैसिलिटीज पाइ परियो ट्रू और फॉल्स okay so basically this will be a positive side of having a competition okay government would do nationalize private sector industries in the national interest जोटा कि 91 पूर्व होतला 1969 रे हमें कहउतले नाइ केते 14 टा बैंक नेशनलाइज हेतला but after LPG reform they tried to stop the practice of nationalizations companies were allowed in banking insurance aviation telecom and other sectors so this is related one is related to liberalization किसी small scale industry ପାଇଁ ଥିଲା जो गुडा इंडस्ट्री ପାଇଁ ଥିଲା फॉर एग्जांपल पिकल बिकरा जोथरे कि गोटे इंडस्ट्री अलाउ करा मतलब से वाला कांसेप्ट हटे दिया गला देन तमे केते बेले नबो जदी तमे गोटे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाला जिंस प्रोड्यूस करतो ताल तुमको लाइसेंस नवा पड़िबो अदर डोंट हैव टू गेट एनी लाइसेंस सिमिलरली इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन नो मोर nationalized अलाउड nationalize करिया नै एंड अलाउइंग प्राइवेट companies into government sector then we'll talk about globalization so the next one is related to globalization it is a process in which nations allow free flow of goods means तम मार्केट को ओपन करूछ ग्लोबल तुमको ग्लोबल मार्केट रो एक्सेस मिलिबो एंड ग्लोबल प्लेयर मानको को तम मार्केट रो भी एक्सेस मिलिबो सो फ्री फ्लो ऑफ व्हाट गुड्स सर्विसेज लेबर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी आइडियाज इनोवेशन क्लियर liberalization privatization globalization free flow of goods means तमे तम गुड्स को केवल निज इंडिया भीतर न बांटी की तमे बाहर बांटिबो सर्विसेज को तमे बाहर को एक्सपोर्ट करे एंड इंपोर्ट भी करे सर्विस लेबर तमरो बाहर जाके काम करिवे एंड बाहर लेबर भी आसी काम करि परिवे एंड दैट वी ऑलरेडी टॉक अबाउट फ्रॉम फ्री ट्रेड पॉलिसी राइट बरे पडुची फ्री ट्रेड पॉलिसी जो थरे हमें देखुतिले कि पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेपा करेक्ट से सब जिंस देन कस्टम यूनियन कॉमन मार्केट एंड फाइनली इकोनॉमिक यूनियन ये सब जिंस हमें ऑलरेडी देखिते तो कॉमन मार्केट वगैरह रे हमें कहउतले कि फ्री ट्रेड ऑफ लेबर also happens right so similarly here also we are talking about globalization means we are trying to do a free flow of goods service labors capital investment technology ideas innovation etc any doubt till 1991
India had a inward looking economy, basically import substitution policy. से माने कमाउतले कि हमको import करियार नहीं, हमें try करियो निज भितर ही सब जिंस production करिया पई. Variety of tariff and non tariff barriers on imports and problem of smuggling. तो एमाने कोन करथले जेहेतु import substitution policy थिला एमाने try करथले tariff and non tariff barrier पके कि import को बंद करेबे कि हमें import करेबो. And tariff and non tariff barrier hope I already discussed, so there should not be any doubt, right? कि what is tariff barrier, what is non tariff barrier, what is that countervailing duty, what is dumping anti-dumping duty, right? जोटा कि tariff है जो non tariff food वाला non food वाला basically agriculture agreement on agriculture, correct? जोटा कि हमें non tariff रे देखिथिले गोटा होची subsidy related आ गोटा होची quality control related, correct no? तो तेनु से सब जिंस रे डाउट anyway नेक्स्ट होची जदि तमे अधिक अधिक restriction impose कला देन कोन हबो स्मगलिंग हबो जिंस आसीबो जोड़ा इंपोर्ट रे तमे बर्तन कहला कि जदि खुला खुला इंपोर्ट रे आसला गवर्नमेंट नजर रे टैरिफ लगा दबो जोथि कि गवर्नमेंट मना कर दोसी आनी हो परियो तेनो जिंस चोरा रे आसीबो दैट मींस दैट इज व्हाट वी कॉल स्मगलिंग. सो वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन करेंसी कन्वर्टिबिलिटी फॉरेन कंपनीज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. Even for currency convertibility, we try to talk about from the perspective of current account and capital account. Can you tell me like whether current account convertibility is 100% or not? In India, current account convertibility, is it 100%? Yes, sir, it is 100%. Okay. But in case of capital account convertibility, we have restrictions. Why? Because that will lead to balance of payment crisis. And balance of payment crisis ना जे तमे अधिक रु अधिक डॉलर ले आसीबो मार्केट को प्रॉब्लम कोन हबो बर्तन डॉलर बहुत अधिक होय गला. दैट मींस से डॉलर को ऑब्जर्व करिया पई की अछि आरबीआई डॉलर को ऑब्जर्व कला पारे आरबीआई मनी छाड़िबो किंतु एते मात्रा डॉलर नै के आसले आरबीआई पाखरे सेति एसेट ही नथियो मनी छाड़िया पई मार्केट को. एंड जदि मार्केट को मनी छाड़िला अगेन ताकू पुणी सक करिया पई अगेन ताकू कोन दरकार गवर्नमेंट monetary policy, correct? Government security, open market operation चलियो कि open market operation पे government security से किछि दरकार. तो सेति पय हम capital account रे convertibility रे हम restrictions लगे कि रखी. And we saw something related to tiger economy. से माने छाडिथिले capital account convertibility जोथि crisis रे पळेले. True? Okay, sterilization process, right? Okay. Next, in globalization, so after LPG reform, India joined the WTO regime, World Trade Organization. We gradually relaxed the tariff and non-tariff barriers on the imported goods. So all related to WTO, we try to talk about the balance of payment. That's why I told all those three pillars that we covered: first pillar, second pillar, third pillar, right? Those application we'll see in next three pillars, 4, 5, 6. Now we are talking about LPG reform. There we'll talk about balance of payment wala. There we'll talk about कि जदि globalization करूचा, liberalization करूचा, privatization करूचा, जदि demand को बढ़ायार अछि, then use the government policy. How government will try to enhance the demand through fiscal policy. कि जो टैक्सेशन वगैरह अछि से टैक्सेशन को कमे दिया डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में राइज हिजो. जदि मार्केट रे इन्फ्लेशन अछि देन फिस्कल पॉलिसी स्ट्रांग हवा दरकार जोथि कि टैक्सेशन तमे अधिक रु अधिक हबो जोथि कि मार्केट टू मनी विथड्रॉ हिजो. ये सब जिंस होछि से कांसेप्ट. सो एनी डाउट इन एलपीजी रिफॉर्म्स? वी कवर्ड दिस एलपीजी रिफॉर्म्स, liberalizations, privatizations, globalizations. Next, fourth industrial revolutions. So industrial revolution, we should know what is first, what is second, and what is third. So first industrial revolution, that is around 1800, powered by coal, iron machines and factories, railways and steam ships and telegraph. These were related to first industrial revolution. See, कथा होछि कि industrial revolution कोड हेला फ्रेंच रेला around 1756 around, right? तो 1756 around रे जतले फ्रेंच रे industrial revolution हला, then we talk about in perspective of India, we are having like first industrial revolution where we try to have powered by coal, all the iron machines, factories, railways. जोगड़ा कि रेलवे तो इंडिया रे केबे स्टार्ट हेतला around 1853, correct? So that is related to Dalhousie, right? Yes, sir. Bombay to Thane. Bombay to Thane. So these were related to कि 1856 1800 रे global level जो first industrial revolution है ना, which was related to coal. कि तुम एनर्जी जनरेट करना ताकू तमे को थ्रू जनरेट करतो ना कोल द्वारा. ऑल आयरन मशीन्स, फैक्ट्रीज, रेलवे चैनल, स्टीम शिप, जहाज वगैरह सब चलिला, राइट? सो कोथरे चलला स्टीम कि तमे कोन कला पानी अछि से पानी गरम कर देन सेटा गोटे टर्बो देला जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी देला या फिर बैंक तमरो शिफ्ट चलला टेलीग्राफ वगैरह एगुडा थिला फास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन.
Second industrial revolutions around 1900 powered by electricity and oil. तो आगुरु चलता कोल रे तमे भी देखिबो ना जो फास्ट स्टार्टिंग रे जो ट्रेन थिला स्वाधीनता मूवमेंट रे जदि तमे देखिबो लाइक इंडिपेंडेंस मूवमेंट सेतले तमे देखिबो कि ट्रेन गुडा रे कोयला थिला लोक कोयला चोरी करथिले राइट कोयला को बारंबार पकाउथिले जोथिरे कि इंजन चलतला ट्रू नेक्स्ट industrial revolution around 1900 रे कोन that will be powered by electricity and oil that means motor vehicles planes telephone tv cinema and radio these came into picture industrial revolution 3.0 1980 onwards computers electric and hydrogen powered vehicles drones flexible robots 3D printers and nanotechnology these started around 1980 now the fourth industrial revolutions this term became popular around 2016's World Economic Forum Davos Summit कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो डाभोस समिट जेतळ हला सेठी स्टार्ट हला गोटे नुवा वर्ड जोटा कि बहुत पॉपुलर हला कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इट ऑप्टिमाइजेस कंप्यूटराइजेशन ऑफ थर्ड रिवोल्यूशन यूजिंग कि ऑलरेडी थर्ड रिवोल्यूशन कोन पळे आसला कंप्यूटर फर्स्ट रे कोन थिला रिलेटेड टू कोल मशीनरीज सेकंड रे कोन आसला इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट नो एंड ऑयल वगैरह थर्ड रिवोल्यूशन रे कोन आसला ना कंप्यूटर्स नानो टेक्नोलॉजी 3D टेक्नोलॉजी ड्रोन ये सब जिनस जो कंप्यूटराइजेशन हैला से गुडा हैला थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो थर्ड ता थिला ताकू एनहांस कराला थ्रू व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग artificial intelligence internet of things that's why you'll see there will be a lot of questions on these artificial intelligence last time essay question was there artificial intelligence internet of things and cloud computing these are all in the market that we should know because there will be a lot of questions on these things this is related to fourth industrial revolutions that means I expect ki whenever there will be a question related to artificial intelligence you should mention that it is related to fourth industrial revolutions is that clear okay so automated manufacturing via AI enabled smart factories so you might be heard about in the news that in future because of the AI there will be too many number of job losses is going to be expected कि बहुत मात्रा रे job loss हबो but the same time there will be much number of job creation will happen but the thing is the person has to upgrade its skill for example गोटे normal लोको लेट भाबिनो गोटे लोक थिला जे एई जिंसटा को उठे कि नै कि आ गोटे जगह रे रखुथिला दैट मींस से कोन करूथिला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वन गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस रे तारा काम करूथिला जोटा कि गोटे फिजिकल वर्क किंतु जदी सेटा गोटे मशीन कर दबो मशीन कोन करबो एठु नै कि आ गोटे जगह को ठेक रखि दबो आराम से तो बर्तमान जो लोक ए कामटा करूथिला से लोकर जॉब लॉस हैला हां कि नै जॉब क्रिएशन को सेक्टर हेबो कि जदी ए मशीन खराब हे गला ए मशीन को ठीक करिया पे लोक दरकार जदी तमे से पाठ पढी पारिलो कि जोटा मु करूथली सेटा को आउ जने करूथि किंतु एमिति न कि से जे करूथि से कंटीन्यूअसली करि चलिबो ओबियसली केबे ना केबे सी भी खराब हो राइट नो जदी सी खराब होला जदी ताकू मु चेंज करि पारिली जदी ताकू मु ठीक करि पारली देन से सेक्टर रे तमरो अपॉर्चुनिटी बढ़ियो से सेक्टर रे तमरो जॉब ग्रोथ बट अदरवाइज जॉब लॉस so optimal use of energy and raw material that means it is trying to keep the waste also कि जदी तमे सब जिंस को मशीन द्वारा तयारी करबो तो मशीन रे बहुत कम लेवल बिकॉज गोटे नॉर्मल तमे जदी गोटे ड्रेस बनिया को चाहो सेथिरे तमे काटिबो आ गोटे जिंस मशीन रे काटिबो मशीन विल बी वेरी यूनिफॉर्म राइट सब जिंस रे यूनिफॉर्म आसीबो बट गोटे हैंडमेड रे ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी तो 100% रहबोनी एज लाइक मशीन्स ट्रू सो वेस्टेज वगैरह जदी तमे देखिबो रॉ मटेरियल वगैरह एनर्जी रिलेटेड वेस्टेज वगैरह बहुत कम होबो इन केस ऑफ इंडस्ट्री लाइक मशीनरीज सो there is a concept called GPI called gang of AI okay the new gang of AI global partnership on artificial intelligence which are the countries India US UK European Union Australia Canada France Germany Italy Japan Mexico New Zealand South Korea Singapore so headquarter is in Paris so what they try to do is basically they are talking about ki how we are trying to sustain this AI in future and what will be the challenges and how we can promote it okay so in fourth industrial revolution which will have a new industrial policy so the 1991 we are having industrial policy jothre ki ame neki asile LPG correct 2017 commerce ministry began drafting new industrial policy for India focus on fourth industrial revolution with 6 areas what are the 6 areas we will have technology and innovations we will have manufacturing and micro small medium enterprises we will have ease of doing business
we will have infrastructure and investment, trade, fiscal policy, skill employability of for future. Why skill employability? Because these skills required for this AI to sustain. कि AI जो machine गुड़ा थिबो से machine means सेगुड़ा केबे ना केबे malfunction हबो, सेगुड़ा केबे ना केबे fail हबो, तो ताकू सब भालिया ପାଇଁ हम पाखे skill थिबा दरकार and जो employability generate हवा दरकार सेही थिबे तमे देखो कि बर्तमान धीरे धीरे ये जो एआई गुड़ा को कोठी इबिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे इबिन स्कूल पिलां को भी स्टार्ट करा होची पढिया पे हां कि नहीं बिकॉज से स्किल दरकार फ्यूचर रे तांकर एम्प्लॉयमेंट दवा पे अदरवाइज से माने भी अनएम्प्लॉयड हेबे जदी नॉर्मल बर्तमान जो बळिया आमे जो गुड़ा पढिथिलु जदी सेमिति स्टैंडर्ड रहबा कि हां चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो कथा होची किंतु इंडस्ट्री चालू छी एआई रे तो पढुता तमे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढुता तमे आर्ट्स या फिर कॉमर्स फ्यूचर रे ई जो सेक्टर रे जदी तुमको इंडस्ट्री सेक्टर को जिबार अछि देन एआई इज मस्ट टू लर्न इज दैट क्लियर नेक्स्ट there is something called samarth udyog bharat 4.0 industrial revolution 4.0 samarth udyog bharat 4.0 which is about department of heavy industry it is samarth means heavy industry samarth udyog udyog is related to industry so you will understand that the department will be heavy industry. What they will try to do, make Indian industry ready for pollution by 2025. How? Next generation, demo centers, training, networking between industries and academia, international cooperations. Udyog Bharat 4.0. India is trying to be ready for the industrial revolution 4.0 by 2025. Through what? By giving academic related reform related to AI and all, cloud computing, artificial intelligence, Internet of Things, okay, demo centers वगैरह बनाओ, training वगैरह दियो, networking between industry and the office, basically से माने industry, let's suppose corporate office गुड़ा जो होता है से माने जाए कि school, college रे promote करते कि how AI will come into a future, how what you should know such that you will cope up with the industry, okay. Related corona same department national capital goods policy 2016 to increase the domestic production of textile mining printing etc basically see heavy industry वाला same department ସେମାନେ try करथिले 2016 रे प्रमोशन करिया पे कैपिटल गुड्स जैसे टेक्सटाइल माइनिंग प्रिंटिंग एक्सेट्रा सेम मशीनरी जोड़ा प्रमोट करथिले सेही सेम मिनिस्ट्री वर्तमान समर्थ उद्योग भारत सी दिस इज नॉट रिलेटेड टू समर्थ उद्योग भारत ओके दिस इज अ सेपरेट वन जोटा कि 2016 रे से माने ट्राई करथिले गोटा पॉलिसी आनिथिले बट हियर using this heavy industry department of heavy industry समर्थ उद्योग भारत से माने ट्राई करथनी इंडिया को बाय 2025 रेडी करिया पे कोथि पे फोर्थ रिवोल्यूशन इज दैट क्लियर so with this we could able to complete what is LPG and we could able to complete what is this fourth industrial revolution first second third very clear what we used in first what we used in coal based machineries like iron based what we used in second electricity, the oil, and oil correct what we used in third computerizations drone technology right so all those things we try to develop in third industrial revolution what we have in fourth AI, artificial intelligence cloud computing and IoT. IoT internet of things okay so basically these things I will cover in science and tech so continuously I am taking every day science and tech discussions so in science and tech whenever these three words right artificial intelligence cloud computing and internet of things these three I will be completing in information communication technology okay there I will try to tell about what is the difference between VR and AR virtual reality and augmented reality then we'll talk about in communication channel see you remember I try to tell you something related to different kind of authentication multi-factor authentication two-factor authentication जदि एना मु क्वेश्चन पचरे मु जानछि तमे भूल करियो फॉर एग्जांपल एटीएम कार्ड केतरा ऑथेंटिकेशन अछि केतरा टाइप ऑथेंटिकेशन debit card how many type of authentication it has anyone Sir, I think single because we use only the PIN. okay. That means you are saying one factor authentication is it Yes, sir. what about the UPI
3 factor. 3 factors. What are the 3 factors? Anyone? What are the 3 factors of authentication? ठीक है. Okay, तो मोबाइल रे केतना प्रकार of authentication? नॉर्मल को जदी कहबी मोबाइल. So for UPI, 3 factors, I think. One is the mobile number, then bank account. And mobile number, bank account, and transaction fee. So first of all, we are not very clear what is authentication, correct? We just know authentication in the sense हमको किसी गोटे तमे पासवर्ड वगैरह दोचे या फिर ओटीपी जनरेशन होची जोथि बेनी मते गोटे एक्सेस मिले गोटे भितर पसे पे. बट ए जो लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन याकू केमिति डिफाइन करा हुए सेटा ही हमें क्लियर ना है. Okay, let me try to see if I have that lecture information communications. Give me a second. So let's complete it. Circular economy, we'll try to take it in the tomorrow's class. Okay, so I will complete it soon. So authentication, there is 2-factor authentication, multi-factor authentication. See, these authentication are based on 3 factors. One is called knowledge, one is called position, and one is called inherence. What is knowledge? When you are trying to remember something, for example password, you are trying to remember. For example, if you try to go to any website, let's suppose Facebook. ठीक अछि, फेसबुक रे इनिशियली कोन थिला तमे यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोथलो. ट्रू. यूजर आईडी और पासवर्ड देकी तमे लॉगिन कर दोथलो. That is called 1-factor authentication because that is based on your knowledge. You have the knowledge, you know ki what is your username, what is your password or pin or secret questions or answer. All kind of things will be considered to be what? Only one level of authentication. Is that clear? See, it can be many, right? See, in Facebook, for example, तमे पासवर्ड भूली गलो. देन से यानी कोन करियो फॉरगेट पासवर्ड मारिबो. देन तमे जीवो. सी खाली फेसबुक कथा कोनी को भी अकाउंट हे जाओ फॉरगेट पासवर्ड कले से तमको कोन बचारिबे कि तमरो डेट ऑफ बर्थ को या फिर तमरो किछु गोटे दियो जीमेल आईडी दियो या फिर लास्ट टाइम कोन पासवर्ड देथिलो से पासवर्ड दियो या फिर तमे हमको कह कि लाइक व्हाट इज द सीक्रेट क्वेश्चन जोटा तमे ऑलरेडी सेव करि रखदिलो, राइट? तार आंसर दियो. These are all related to what? Based on your memory, based upon your knowledge. That means we are using only 1 factor of authentication. Is that clear? Yes, sir. Okay, so what is second factor of authentication? When you are having some possession, for example, you are having digital signature, smart card. Let's talk about कि तमे बर्तन भूली गलो, पासवर्ड भूली गलो, तो हठात से माने कहउछन ठीक अछि तमे मोबाइल नंबर दियो. तमे बर्तन मोबाइल नंबर दिलो, मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी आसिला. नाउ से ओटीपी देई कि तमे कन्वर्ट करूछ कि तमे पासवर्ड को चेंज करे पे. What kind of authentication it is? 2-factor authentication. It is not required any knowledge. They are working on फोन नंबर जदि तमे दोछ तम फोन को गोटे मेसेज जीवो. दैट मींस से फोन रो एटलीस्ट से सिम को तमे पोजेस करथवा दरकार, तम पाखरे से सिम थिवा दरकार. दैट मींस यू रिक्वायर्ड नाउ द डिवाइस. So when you have the device, basically जो पिन आसुची तम मोबाइल को जो पिन आसुची, what kind of authentication it is? 2-factor authentication. First of all, you log into the site. For example, if you try to do income tax return file, right, ITR file, first what you will do, you will go and log in. तो login कला परे सेकंड कोन हो गोटे ओटीपी आसीबो. Even in case of Google, if you try to see Google जेतले Gmail तमे खोलुछ, Gmail रे username and password, one type of authentication, knowledge based, correct? No, तमे तमर यूजर आईडी देला, पासवर्ड देला, नॉलेज रहिला, हां कि नै? देन एबे कोन कहउछन से माने 2 टाइप ऑथेंटिकेशन. सेकंड टाइप ऑथेंटिकेशन कोन कि से गोटे पठेबो कि गोटे डिवाइस रे गोटे कोड आसीबो. लेट सपोज गोटे नंबर आसला 20 कि 10 केई देखिथिबो ना. देन से कहबे कि तमे जाई कि जीमेल जो अछि एई फोन टारे तमे से फोन रे ओपन करो, सेथिरे जाई कि डिजिट टा को टाइप करो, ताहाले ही एटा खोलिबो. What kind of authentication it is? On the basis of positions. Are you actually possessing that device?
If you are possessing, then you will able to open the Gmail, or else you cannot open the Gmail. You understood, right? Yes, sir. Okay. The third one is called inherence, means your biometric fingerprint or iris pattern, means now the same person has to be there. One is related to memory, one is related to his position, the third one is related to the person biometric. For example, ତମେ ଦେଖିଥିବ यूपीआई सिंपल यूपीआई ର ଯେତେବେଳେ ତମେ ଓପନ କରିବ ଫାଷ୍ଟ ତ କଥା ହେଲା କି यूपीआई ର ट्रांजैक्शन ଯେତେବେଳେ ତମେ କରିବ ଗୋଟେ ତମେ यूपीआई କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତମକୁ କଣ ଦରକାର लेट्स सपोज बायोमेट्रिक ହଁ କି ନାହିଁ बायोमेट्रिक ତ ଦରକାର ନା Yes. ओके तो जेतेବେଳେ तमे किछ गोटे बैंक रो ट्रांजैक्शन करूछ एक रे जो यूपीआई रो जो पिन तमे जनरेट करथिबो सेटा भी गोटे ओटीपी थ्रू रे जनरेट करथिबो ट्रू ओटीपी वगैरह देके जनरेट करथिबो ना मते गोटे Yes. बैंक यूपीआई कार्ड टा को ऐड करियार अछि तो बो पाको बैंक रो गोटे ओटीपी आसिला मींस दैट इज सेकंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन because I possess that mobile, I possess that SIM, that's why I am getting a OTP, and that OTP I will add. That is second level of authentication. So I am talking about there is a biometric, there is a OTP, then there will be a PIN. That PIN is based upon your memory. Okay. Yes, sir. That's why the UPI see you talk about anything तमे से भी थ्रू जाई कि तमरो से फास्ट मागुती तम बायोमेट्रिक दियो मींस फिंगरप्रिंट दियो देन से कहउची कि तम फेस देखाओ सी फेस देखाओ फिंगरप्रिंट दियो ये सब होची थर्ड लेवल ऑफ इंटरफेस लाइक थर्ड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन से चाहे 20 टा ही थाई पारो बट टोटल होची मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मींस टोटल होची तीनटा जोठी तमे नॉलेज तम पोजीशन एंड तम इनहेरेंस बेसिकली यू आर द पर्सन with whom or without whom you cannot access. Without whom in the sense his biometric is required, fingerprinting or iris pattern, anything, or it can be a combination of anything. मु कहूची जदी गोटे मु एप्लीकेशन डेवलप कली भाबिनियो मु सिंपल गोटे कहूची नॉर्मल गोटे एग्जांपल गोटे एप्लीकेशन मु डेवलप कली लेट सपोज I created one site jyoti.com okay and in that I want you to register तो जतले तमे रजिस्टर कलो देन तमे कोन दबो यूजर आईडी पासवर्ड गोटे तमे पाइबो ठीक अछि देन मु कहूची तमे जतले यूजर आईडी पासवर्ड पाइबो मु तम मोबाइल नंबर भी नेछि मोबाइल नंबर काहे कि नेछि बिकॉज़ आई वांट टू डू दिस सेकंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन तो जेतले तमे वर्तन लॉगिन करिया को जाउछ फास्ट तो तमे तम यूजर आईडी एंड पासवर्ड देला दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट योर नॉलेज होंगी नहीं भाबिनियो तमे Yes, sir. यूजर आईडी पासवर्ड दे दला पुनी जेतले नेक्स्ट करूछ तुमको से हठात पचारची तमरो डेट ऑफ बर्थ जत पर्यंत तमे डेट ऑफ बर्थ दबनी सेते पर्यंत भी तुमको एक्सेस मिलबनी इज द डेट ऑफ बर्थ इज कंसीडर्ड टू बी अ सेकंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन No. No, Knowledge. that is again based on knowledge, right? That is still first level of authentication. Then तमे आगु गला डेट ऑफ बर्थ देई सरला पर आगु गला से कहूची तम फोन नंबर दियो या फिर ईमेल आईडी दियो देन तमे फोन नंबर और ईमेल आईडी बहुत देला फोन नंबर को भी ओटीपी गला ईमेल आईडी को भी ओटीपी गला मु कहूची बर्तन फोन नंबर को ओटीपी आसिला ईमेल आईडी को भी ओटीपी आसिला इज दिस लाइक टू डिफरेंट वे ऑफ ऑथेंटिकेशन still the same, right? Same time. Same. Same. It is related to position. That means you can use your email ID where you can get the OTP, or you can use your phone number where again you can get the OTP. Authentication is two-way authentication, right? This is called two-factor authentication. जदि तापर तुमको एक्सेस मिली गला पूरा पोर्टल टाको खोलिया पई then it is considered to be the whole site is of two type of authentication. Is that clear? Two-factor authentication. Yes. If I want to go and make it more secure, then I will go for three-factor authentication. हमो कहबी कि भाई तुम फिंगरप्रिंट दियो थर्ड स्टेप रे जतले तमे ओटीपी दे देला ओटीपी देला पर पुनी ट्राई कर एक्सेस करिया पे से मागुच भाई फिंगरप्रिंट दियो जानिया पे कि एक्चुअली तमे ना नो दिस इज रिलेटेड टू अगेन वन टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन दैट इज कॉल्ड बी और इनहेरेंस फिंगरप्रिंट गला देन पुनी आसिला कि भाई तमे फोटो फेस रो अनलॉक करो इज दैट फेस अनलॉकिंग ए डिफरेंट वन नो दैट इज आल्सो कमिंग अंडर द थर्ड वन इज दैट क्लियर Yes, sir. so now you should be very clear what is this e authentication type what is two-factor authentication and what is multi-factor authentication. Now you give any example, not only just UPI or now you talk about bank or debit card ना तो debit card रे कौन हबो फास्ट तमे एक रे तो कार्ड को पोजेस करूछ करेक्ट नो जे पन से कार्ड जनक पाखरे नहीं ताहाले से यूज ही करि परियोनी ट्रू so one is related to possession the second one is related to security pin that is related to knowledge Knowledge. जदि सेठी से कहबो कि नाही से साइड रे गोटे जो अछि कोन सेटा कहंदी फिंगरप्रिंट वगैरह कि तमे फिंगरप्रिंट दियो ताहाले सेटा भी आसीबो थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन जदि तुमको एटीएम रु पैसा काढला बेलको सेठी गोटे फिंगरप्रिंट देकी तमे फिंगरप्रिंट देले ही दैट मींस कोन मु कहूची तम एटीएम आउ के नै कि यूज भी कर परिबो ट्रू
एमती कौन एटलिस्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मु एटीएम कार्ड टा जन को दे देबी मु मो पिन कार्ड टा जन को दे देबी सी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रे से स्टिल मनी विथड्रॉ कर करियो बर्तन मु जदी कहबी कि मु आको आहुरी सिक्योर बनेबी यूज द थर्ड वन जे पर्यंत से लोक न आसी से पर्यंत पैसा उठे हबन काहेकि बिकॉज से लोक आसिले तार फिंगरप्रिंट स्कैन हो जोटा कि आमे ए जो थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन ए जो थर्ड नंबर टा आमे कोठी यूज करजे डाली चावला आणला करेक्ट नो पीडीएस सिस्टम बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आइरिस that means a person को पहुंचवार अछि we are not using basically we are not giving any access right but actually से person को पहुंचवार अछि जोति ପାଇଁ कि हमें सेठी भी हमें सेटा को गोटिए फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहउछे हां कि नहीं hope it is clear right Yes. any kind of question related to authentication you should able to do from knowledge position and inherence okay chalo thank you everyone so tomorrow again we will start with circular economy okay and we'll continue